Hi class 10th. So here's the question from chapter 1 real numbers, and this is one of the most important question, and the beauty of this question is that it can come in 2 marker, in 3 marker, and also in 4 marker, isn't it? Imagine, look, you have to do the same stuff, just you will do it in a way. If it comes in 2 marker, it will be smaller, shorter. It If it comes in 4 marker, then you have to give the full presentation. So this question comes in 2 or 3 different patterns, so we are going to discuss each and every pattern. So this is the first simplest way. So remember, most important question, and this is actually like a theoretical question. You have to write each step. Okay, don't just skip these steps. So this is actually a whole page question. So theoretical question and no calculation, you just have to prove. It says prove that root 2 is a irrational number. ठीक है, तो we have to prove root 2 is irrational number. अब आप सबको पता है irrational number कौन से होते हैं? The number which are not perfect square, when they are within the root, they are called irrational. Clear? So अब मुझे पता है root 2 irrational है, but I have to prove if I want to score marks. So we will start this question with a contradiction, like we have to prove it is irrational. So let us assume root 2 is rational. Okay, so we are just taking the contradiction. We know it is not rational, but we are taking it as a rational, and at the end we will prove that it is irrational. Now if a number is rational, so do you know the definition of a rational number? Yes, a rational number is that which can be written in the form of p by q, where q, the denominator, can't be equal to 0, and at the same time P and Q are co-prime. So we will just write it root 2 in the form of a rational number. So we can write, agar we are saying that this is rational, so definitely I can write it in the form of P by Q, and also write the condition Q is not equal to 0, and one more thing, P and Q are co-prime. Okay, now what is this co-prime numbers? So co-prime numbers are those numbers which are having only one as their common factor and not any other will be their common factor. Okay, so अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? We will just like squaring both sides. Okay, squaring both sides. So what do you mean by squaring both sides? Like LHS we will square this, and RHS we will square this as well. So this is meant by squaring both sides. And when I just open the square, it will be 2, because root 2 ka square is 2, and on the right side it is p square by q square. Here, and I can write it as like just cross shift, q स्क्वायर को आप LHS में ले जाइए और 2 को आप RHS में ले आइए. So q square is equal to p square upon 2. I just shifted the terms, nothing else in this step. Now what does it mean? P square upon 2. So it means 2 is a factor of p square and p as well. Clear? So अगर 2 p square का फैक्टर है तो इट विल बी अ फैक्टर ऑफ p as well. अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये वाला जो मैंने स्टेप लिखा है, I can write it in one more way, but you have to choose whether you want to write it in this way or that way. ठीक है, either I will write the factor or divides. So यहाँ पे आपको एक और जो चीज आप लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं, p square is divisible by, p square is divisible by 2, and p is also divisible by 2. p is also divisible by 2. Okay बच्चा, so either this or this. Please ध्यान देना, we will not write these two in the same question. Either I will go for this red part or for this blue part, your choice. Now let's move on to the main question. यहाँ पे से मैं इधर एक स्टार लगा रही हूँ. स्टार लगाने का मतलब है either the first this one or this one, one of the reason will go with this. अब ये जो है इसको आप
फर्स्ट इक्वेशन के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं ये बोल रही हूँ 2 इज अ फैक्टर ऑफ p as 2 is a factor of p, therefore I can write p is equal to 2r. Clear? अब ये जो मैंने p की वैल्यू चूज किया, I will put this in equation 1. So q square is equal to, in place of p I can write 2r divided by 2. And now just open the whole square stuff. Now this symbol is known as which employ means the step next to the previous one. So 2 square 4 r square upon 2. Now just cancel a common factor 2 from this, and we can again write it like q square upon 2 is equal to r square. So I just shifted 2 from the right side on the left side. So देखिए बिल्कुल सेम हमारा प्रीवियस जैसा इक्वेशन 1 था, बिल्कुल वही वाला टोन आ गया है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आया है बताइए? It imply 2 is a factor of 2 is a factor of q square and q is a factor of q square and q as well. Oh my god! Look what we said. We said p and q are co-prime. They don't have any common factor other than 1. But now we are saying 2 is a factor of both p and q. Okay, so what happened? This contradicts our assumption. This contradicts our assumption. हमारी assumption क्या थी भला? हमारी assumption थी P and Q are co-prime. We said that root 2 is rational number. So this contradicts our assumption, and we can say root 2 is a irrational. Root 2 is an irrational number. Clear? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन जरूरी नहीं है रूट 2 में ही आपको पेपर में आए. इट कैन बी रूट 3, इट कैन बी रूट 5, रूट 7. So any prime number within the root you have to prove that irrational. So we will use the same method again for all the questions. Thus just the thing is, here if we have to prove root 2 irrational, then root 2 के case में 2 will be the common factor when we prove it. If it is root 3, then 3 will be the common factor. And if it is root 5, in that case 5 will be the common factor, and that will contradict our assumption. So please be very attentive. ऐसा नहीं करना कि आपको root 3 आता है, still you are making 2 as a common factor, because देखो root 2 की जगह आपका root 3 हो जाएगा, and 3 divides p or p square. Similarly 3 divides q or q square, hence 3 is a common factor. So please be aware of this step. So in the next question, this is just the step up of the previous. If we have proved one term like root 2 irrational. Now this question can come as prove that 3 minus root 2 is not a rational number. अब यहाँ पे देखो प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें कोई स्टेटमेंट डिफरेंस तो है नहीं ना, उसमें हमने irrational प्रूफ करना था और यहाँ पे not a rational प्रूफ करना है. तो one thing, both the question are same. Second thing, the previous question has only root 2 as a single term within it, but here we are having 3 minus root 2. Now just remember, if the question comes in 2 marker, in that case we will take root 2 as irrational directly, and we will do the step like I'm going to show you. But if this question comes in like say 3 marker or 4 marker, in that case you will prove root 2 irrational just like we did in the previous question. ओके, जस्ट ध्यान रखना, अदरवाइज बाद में मत बोलना मैम मार्क्स कट गए. उस केस में मैम कुछ नहीं करेगी, आपको ही करना होगा जो आप कर सकते हो. ठीक, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका नॉर्मल जैसे हम लोगों ने किया था. सबसे पहले तो आप रूट 2 को एक इरैशनल नंबर प्रूव कर सकते हो. ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको उसके बाद वाला स्टेप सिखा रही हूँ. सो हम नॉर्मल जैसे हमने किया था ना, let us assume 3 minus root 2 is rational. क्लियर? मैंने इसको रैशनल एज्यूम कर लिया. अब इसका मतलब क्या होगा, मैं 3 minus root 2 को a upon b, बिकॉज रैशनल नंबर की डेफिनेशन है ना, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऐसे लिख सकती हूँ, where b is not equal to 0. And there is one more thing I should mention, that a and b are co-prime.
I think you are already aware what does the co-prime mean. Co-prime means the numbers which don't have any other common factor than one. Only one is a common factor. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रूट वाला नंबर है ना उसको हम एक तरफ शिफ्ट कर देंगे और बाकी सब टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे. सो लेट्स टेक 3 a अपॉन b को मैं मूव कर रही हूँ लेफ्ट साइड पे, रूट 2 को विद नेगेटिव साइन से उसको शिफ्ट कर दी हूँ राइट साइड. अब ये करने का लाइक इफ यू वांट यू कैन जस्ट मूव शिफ्ट 3 एज वेल, बट उस केस में मुझे फिर साइन को अकोमोडेट करना पड़ता. तो अब मैंने यहाँ पे अपना एक स्टेप सेव कर लिया है. अब यू कैन जस्ट टेक द एलसीएम एंड देन यू कैन राइट इट लाइक दिस इज इक्वल टू रूट 2. अब देखो सिर्फ और सिर्फ विद इन द 2 steps we can say the given number 3 minus root 2 is irrational. कैसे? देखो ना यहाँ पे LHS ये जो है आपका 3b a are integers. 3b a are integers. Therefore 3b minus a upon b is rational. ठीक है ना, दिस इज रैशनल. अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं यहाँ पे मेरे पास रैशनल है ऑन द लेफ्ट और दिस आई नो दैट दिस इज irrational. Will you feel yes this is rational, this is irrational, so they can't be equal. Hence 3 minus root 2 is irrational. सो दिस इज ओनली 42 मार्कर. अगर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो उस केस में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं. 3 एंड 2 मार्कर में प्लीज रिमेंबर इंपॉर्टेंट नोट है, यू हैव टू प्रूव रूट 2 इज आल्सो irrational. Okay, now this in this question what we did, sum of a rational, you can say difference of a rational and irrational is irrational, and this can also come as you can say product of non-zero rational and a rational. Like let me write it on the right corner here a bit about this. So if we have to prove 3 root 5 is irrational, ठीक है ना, 3 root 5 is irrational, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा. आपका root 5 irrational होता है तो product of non-zero rational and an irrational is irrational only. So we will move on to the same concept, like you can write it 3 root 5 is equal to a upon b and root 5 is equal to a upon 3b. Now this is rational, this is irrational, they are not equal, hence the given number 3 root 5 is irrational. Now this question now comes as this format where there will be a sum or the difference of two irrationals and we have to prove this is irrational as well. As you know, if we add two irrational numbers, the sum or difference will always be irrational. But yes, we have to prove. So we will prove in the similar manner, but there is one more step that you have to remember. Like the first step will be same. Let us assume root 2 minus root 3 is rational. ठीक है, सबसे पहले हमें कॉन्ट्राडिक्शन ही एज्यूम करनी है. उसके बाद रूट 2 माइनस रूट 3 अगर आपका रैशनल है, इट मींस इट कैन बी रिटन एज a अपॉन b where b is not equal to 0 and a and b are whole prime. तो ये वाली चीज तो मैं कभी भी नहीं भूलने वाली हूँ, बार बार मुझे लिखना ही होगा इफ आई वांट टू स्कोर फुल. अब यहाँ पे काफी बार बच्चे जो मिस्टेक करते हैं दिस स्क्वायर डायरेक्टली, बट अगर आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं तो आप एक इररेशनल नंबर जो प्रूफ करने के लिए आपको प्राइम नंबर विद इन दी रूट चाहिए उसको आप मिस कर जाते हैं. तो ये आपका की स्टेप है इस क्वेश्चन का. सो रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस रूट 3. प्लीज रिमेंबर दिस स्टेप. आपको स्क्वायरिंग करनी है बट आफ्टर शिफ्टिंग वन ऑफ द टर्म्स. अब यहाँ पे आप रूट 2 को भी शिफ्ट कर सकते थे, यहाँ पे आप रूट 3 को भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये आप ही की चॉइस है. अब इससे मैं क्या कर सकती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ओके, अब अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा रूट 2 का स्क्वायर और इधर आपका आएगा a अपॉन b प्लस रूट 3 होल स्क्वायर. अब a plus b का होल स्क्वायर जो होता है, यूजिंग आइडेंटिटी 1 you have to use स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर this will be 2 only and on the right side it will be a square upon b square plus रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है plus 2a and b. ठीक है, 2ab. अब यहाँ पे आपका लाइक p प्लस q होल स्क्वायर, अगर मुझे आइडेंटिटी 1 लिखनी है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq.
तो जनरली वॉट एवर आइडेंटिटी यू आर यूजिंग इन योर क्वेश्चन यू कैन जस्ट राइट इट। ओके, कोई स्कोप मत छोड़ो कि टीचर कहीं भी आपके नंबर काट पाए। अब यहाँ पे आप लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, बट उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो रूट वाली टर्म है उसको एक तरफ छोड़ेंगे, बाकी सब कुछ आप शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए ये मेरा हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a अपॉन बी रूट 3। अब इसको आप -1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो माइनस साइन को इफ यू वांट यू कैन टेक इट एज कॉमन एज वेल। सो दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा बी स्क्वायर है, और इसी के साथ में लेफ्ट साइड में से जो आपका बी और 2a है उसको शिफ्ट कर दूंगी ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक बी से एक भी आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड आई कैन राइट इट लाइक माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू रूट 3। देखो सिमिलर टून आ गया। सो दिस इज आपका रैशनल ऑन द लेफ्ट साइड and this is our irrational on the right side. So rational is not equal to irrational. Hence आपको फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखनी है, रूट 2 माइनस रूट 3 is irrational. Root 2 minus root 3 is irrational. Yippee! So this is the very important question. थोड़ा ध्यान से करना. If you want to explore more question, just drop me a message. Thank you so much मेरे बच्चा.